दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की मेन स्ट्रीम मीडिया में, सोशल मीडिया में, टेलीविजन मीडिया में काफ़ी चर्चा हो रही है। अखबारों में काफ़ी लेख छप रहे हैं इस चुनाव को लेकर। ओपिनियन पोल्स भी आने शुरू हो गए हैं। बहुत जल्द चुनाव भी हो जाएगा। लेकिन इस बीच एक बड़ा दिलचस्प चुनाव और हो रहा है जिसको शायद उतनी सुर्खियां नहीं मिल रही हैं, लेकिन ये चुनाव अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है कांग्रेस पार्टी के लिए। खास तौर पर 13 तारीख को दोस्तों वायनाड में उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। राहुल गांधी ने यहाँ से चुनाव लड़ा था 2024 के लोकसभा चुनाव में। राहुल गांधी ने रायबरेली और वायनाड से चुनाव लड़ा और उसके बाद रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों में उन्होंने बम्पर जीत दर्ज की। लेकिन उसके बाद कहा कि रायबरेली सीट वो अपने पास रख रहे हैं, लेकिन वायनाड सीट वो चाहते हैं कि क्योंकि वायनाड सीट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो वो चाहते हैं कि वो सीट परिवार के पास ही जाए। और इस सीट के जरिए राहुल गांधी एक संदेश देना चाहते थे कि भले ही वो वायनाड में नहीं है, लेकिन वो ना होकर भी हैं अपनी बहन के माध्यम से। और प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। और जब से प्रियंका ने यहाँ से नामांकन भरा है दोस्तों वायनाड से, बहुत इंटेंसिव प्रचार कर रही हैं प्रियंका यहाँ पर। लगभग हर दिन वो चुनावी रैली को संबोधित करती हैं और वो अंग्रेजी में बोलती हैं। साथ में स्थानीय भाषा को ट्रांसलेट करने के लिए एक ट्रांसलेटर मौजूद होता है। और प्रियंका का ये जो प्रचार था, आज उसका आखिरी दिन था क्योंकि 13 तारीख को वोट डालने हैं, तो आज शाम प्रचार का शोर थम जाएगा। इसीलिए राहुल गांधी वहां पहुंचे ये बताते हुए कि उनका असली लव कौन है। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने कुछ इस तरह से रोड शो में प्रियंका गांधी का साथ दिया। लेकिन सबसे दिलचस्प वीडियो ये वाली, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया में बहुत है और जिसको खुद भी राहुल गांधी ने शेयर किया है। देखिए ये वीडियो। अमूमन राहुल गांधी इस तरह का प्रचार दोस्तों उत्तर भारत में या किसी खुद रायबरेली की अपनी सीट में करते नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वायनाड के लिए वो ये सब कर रहे हैं क्योंकि वायनाड जाहिर तौर पर बहुत स्पेशल है राहुल गांधी के लिए। 2019 में अगर वायनाड ना होता तो शायद राहुल गांधी संसद ना पहुंच पाते, क्योंकि अमेठी से वो हार गए थे। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि वायनाड उनके दिल के बहुत करीब है, तो यहाँ पर टी शर्ट पे भी दिल बना हुआ था। और जब राहुल गांधी ने वहाँ पर स्थानीय लोगों को वो टी शर्ट दिखाई, तो जिस तरह का एक अपील राहुल गांधी की है वायनाड में, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, वायनाड से प्रियंका गांधी का चुनाव जीतना बहुत हैरानी नहीं होगी। लगभग हर कोई मान रहा है कि प्रियंका गांधी के लिए यहाँ पर चुनाव जीतना आसान होगा। बस इसी बात पर हर कोई बहस कर सकता है कि कितने मार्जिन से प्रियंका गांधी यहाँ पर जीतती हैं। प्रियंका इसके बाद अगर संसद पहुंचती हैं तो वो मौजूदगी कैसी दर्ज कराती है एक सांसद के तौर पर, ये देखना भी दिलचस्प होगा। साथ में ये पूरा का पूरा प्रचार अगर आप देखें तो बड़ा दिलचस्प प्रचार रहा, क्योंकि प्रियंका के नामांकन के दौरान आपको याद होगा उनके पति मौजूद थे, उनके बेटे उनके साथ मौजूद थे। इसके अलावा सोनिया गांधी खुद आई थी। अमूमन सोनिया गांधी नहीं आती हैं अब इस तरह से, लेकिन सोनिया गांधी आई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। राहुल गांधी तो खुद लगातार आ ही रहे हैं। और नामांकन के दौरान भी एक कंट्रोवर्सी खड़ी करने की कोशिश की थी बीजेपी आईटी सेल ने, याद होगा आपको, ये कहते हुए कि मल्लिकार्जुन खड़गे क्योंकि एक दलित हैं तो उनका अपमान करते हुए नामांकन जहां पर हो रहा था जिस कमरे में, उस कमरे से उनको बाहर निकाल दिया गया। हालांकि बाद में इस दावे की हवा निकल गई और कांग्रेस पार्टी ने खुद बताया कि न केवल मल्लिकार्जुन खड़गे बल्कि राहुल गांधी भी उस वक्त बाहर ही थे, क्योंकि जो दफ्तर के अंदर अधिकारी थे उन्होंने इजाज़त नहीं दी 5 लोगों से ज़्यादा अंदर लोगों को लाने की। बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे अंदर आए और सबके साथ फिर प्रियंका गांधी ने सबकी मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। दोस्तों, बीजेपी आईटी सेल का ये वीडियो आगे बढ़ाना इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है प्रियंका के संसद में पहुंचने में। दोस्तों, राहुल गांधी ने हाल के सालों में अपनी एक भाषण देने की शैली डेवलप की है, जिसमें वो बहुत लंबे चौड़े क्लिष्ट हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। वो बहुत शेरो शायरी नहीं पढ़ते। राहुल गांधी का अपना एक अंदाज है भाषण देने का। वो उनके सेंटेंसेस छोटे होते हैं, उनके भाषण में अंग्रेजी के भी शब्द होते हैं। राहुल गांधी का भाषण कई लोगों को बहुत पसंद आता है। कई लोग कहते हैं कि अभी भी राहुल गांधी मोदी के बराबर का भाषण नहीं देते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि एलओपी के तौर पर लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने न केवल मजबूती से अपनी बात बार बार दर्ज कराई है, अब तक वो करा रहे हैं, बल्कि
एक सांसद से कहीं ज़्यादा एलओपी के तौर पर जिस तरह की भाषण दे रहे हैं उसमें बहुत लोगों ने उनके भाषण की तारीफ़ की है और उनके भाषण की शैली विकसित हुई है। लेकिन प्रियंका उनसे काफ़ी अलग भाषण देती हैं। प्रियंका गांधी वो कर सकती है अपने भाषण में जो राहुल गांधी नहीं करते। राहुल गांधी बहुत निजी हमले नहीं करते हैं बीजेपी पर, मोदी पर, लेकिन प्रियंका गांधी करती हैं। जैसे लोकसभा चुनावों के दौरान प्रियंका गांधी ने मोदी जी के आपकी 2 भैंस में से 1 भैंस कांग्रेस ले लेगी इस भाषण का खूब मजाक उड़ाया था और वो काफ़ी वायरल हुआ था उसके बाद कि किस तरह की बातें करते हैं मोदी जी। इसके अलावा दोस्तों अमेठी रायबरेली में प्रियंका गांधी ने बहुत इंटेंसिव प्रचार किया था। खुद राहुल गांधी कहते हैं कि अगर वो रायबरेली में जीते हैं तो वो अपनी बहन की वजह से जीते हैं क्योंकि उनके पास वक्त नहीं था रायबरेली में कैंपेन करने का। तो कैंपेन काफ़ी अच्छा रहा है प्रियंका का। अब देखना होगा कि वो जीत पाती हैं कि नहीं जीत पाती हैं और अगर जीतती हैं तो कितने मार्जिन से जीतती हैं और उससे भी इम्पोर्टेंट वो कैसी सांसद बनती है, क्योंकि वायनाड के लोगों ने राहुल गांधी को सांसद के तौर पर देखा है। वायनाड के लोग राहुल गांधी का ये स्टाइल भी देख रहे हैं जिसमें वो टी शर्ट में आई लव वायनाड दिखा रहे हैं लोगों को। लेकिन अब लोग देखना चाहते हैं कि एक सांसद के तौर पर प्रियंका गांधी किस तरह का काम करती हैं और किस तरह की मौजूदगी संसद में वायनाड की सांसद के तौर पर दर्ज कराती हैं। आज रोड शो के बाद राहुल और प्रियंका ने लोगों को संबोधित भी किया, सुनिए। ഞാൻ എന്താ പറയേണ്ടത്? എന്റെ സഹോദരി ഇപ്പോ രാഷ്ട്രീയ വികാസത്തെ കുറിച്ചും അത് മാത്രമല്ല സ്നേഹത്തോടു കൂടിയ ഒരു പ്രസംഗം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി. But I have come here not as the candidate but as a campaigner. പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ടല്ല, പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. As I already mentioned to you, I'm already your unofficial member of parliament. So I don't need to stand as the official member of parliament. ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഈ വയനാട് പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിലെ നിങ്ങളുടെ അനൗദ്യോഗിക ജനപ്രതിനിധിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധിയാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. So today when I was coming on the way here on the plane I was thinking to myself that I was member of Wayanad for 5 years. What did I get from the people of Wayanad? Whenever I hear, naturally I feel happy. ഞാൻ എപ്പോ വയനാട്ടിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോഴും സ്വാഭാവികം എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. Like sometimes even if I'm in a little bit irritated mood, if I'm going to go to Wayanad, I'm like, oh good, I feel happy. The thing is that every politician they have certain times in their life when their perspective changes, their view of things change. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സമയമുണ്ട്, ആ സമയത്തിൽ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറും. അവരെങ്ങനെയാണോ കാര്യത്തെ കാണുന്നത് അത് മാറും. So you know when I first went on the Bharat Jodo Yatra, I was a bit surprised because it was a political walk. ആദ്യം ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിൽ പോയപ്പോ ഞാൻ കുറച്ച് അതിശയിച്ചു, കാരണം അത് രാഷ്ട്രീയപരമായ ഒരു നടത്തമായിരുന്നു. The purpose of the walk was political. ആ യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അത് രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു ഉദ്ദേശമായിരുന്നു. To give a message that everybody should stand together, everybody should be united, everybody should respect each other. അതിന്റെ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം, എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ഐക്യം ഉണ്ടാവണം, എല്ലാ മനുഷ്യരും പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കണം. ഇതായിരുന്നു ആ യാത്രയുടെ രാഷ്ട്രീയ സന്ദേശം. But in the beginning of the yatra already I noticed that I was hugging people were kissing me, I was saying I love you, they were saying we love you. പക്ഷെ യാത്ര തുടങ്ങിയപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഞാൻ ആളുകളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയായിരുന്നു, അവരെനിക്ക് ഉമ്മ തരികയായിരുന്നു, ഞാൻ ആൾക്കാരോട് പറയായിരുന്നു ഐ ലവ് യു, ആൾക്കാർ എന്നോട് പറയായിരുന്നു വി ലവ് യു. And I realized while I was on the plane today that
For many years, I did not use the word love in politics. ഞാൻ ഇന്ന് പ്ലെയിനിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചറിയായിരുന്നു ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഞാൻ ലവ് അഥവാ സ്നേഹം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല. And after I came to Wayanad, suddenly I started using the word love in politics. അത് മാത്രമല്ല, വയനാട്ടിൽ വന്ന ശേഷം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സ്നേഹം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. And I realized that it is because the people of Wayanad gave me so much love and affection that my entire politics changed. എനിക്ക് മനസ്സിലായി, വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങളായി നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്നേഹവും ഇഷ്ടവും നൽകിയത് കാരണം എന്റെ രാഷ്ട്രീയം തന്നെ മാറി എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. I realized that the only weapon to actually counter hatred, anger is love and affection. ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന ശേഷം തിരിച്ചറിഞ്ഞു, ദേഷ്യത്തെ, കോപത്തെ ഒരേ ഒരു ആയുധം സ്നേഹവും ഇഷ്ടവുമാണെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. Sometimes now I go in Delhi, sometimes I go out, and after the yatra, people will say to me, "Oh, we love you," and I will answer them, "I love you." ഞാനിപ്പോ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ഡൽഹിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ആളുകൾ എന്നോട് വന്ന് പറയും, "വി ലവ് യു," ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ തിരിച്ച് ഞാൻ പറയും, "ഐ ലവ് യു," ഞാനും നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചു പറയും. And sometimes I think from so many years as a politician I did not use that word. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി, ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ ഒരുപാട് കാലം ഞാൻ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. And people of Wayanad taught me that word has a very important place in politics. വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങളായി നിങ്ങളാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത്, സ്നേഹം എന്ന വാക്കിന് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനമുണ്ട്. That is why I'm wearing this t-shirt. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ടീഷർട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. Now she's the MP candidate, correct? But she's also my little sister. I'm older than her. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇപ്പോ പ്രിയങ്കാജി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ്. പക്ഷേ എന്റെ ചെറിയ അനുജത്തി കൂടിയാണ്, ആളാണ്. So right to say something, not only as a but as an elder brother. അതുകൊണ്ട് പ്രചരണത്തിന് വന്ന ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്കല്ല, ഒരു മൂത്ത സഹോദരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് കൂടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള അവകാശം എനിക്കുണ്ട്. So I can complain to the people of Wayanad about my little sister. വയനാട്ടിലെ ആളുകളോട് എന്റെ കുഞ്ഞു അനുജത്തിയെ പറ്റി എനിക്ക് പരാതി പറയാനും പറ്റും. So now if I am in public in Wayanad and I hug, I give her a kiss, she said, "Don't do that." ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ അനിയത്തിയെ പിടിക്കണം, ഉമ്മ കൊടുക്കണം പറയാം, അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പറയും. But if I am giving hugs and kisses to the people of Wayanad, why can't I give a hug and a kiss to my sister? ഞാൻ വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഉമ്മകൾ തരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ അനുജത്തിക്ക് കെട്ടിപ്പിടിക്കുക ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കുക എനിക്ക് ചെയ്തുകൂടാ? Correct? ശരിയല്ലേ? So you please tell her that this is not correct behavior. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അനുജത്തിയോട് പറയുക, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയുക. That I am her elder brother and I am allowed to show affection for her in front of people of Wayanad, in front of the people of India.